Hello, good evening, sir. Good evening, guys. Yes, let Hi. me start. If you introduce yourself, then we'll be. Yes, sir. Myself is Ayush Aher. I have done my 10th from PVSS Sainiki School, Loni, and my 12th from SHGM College, Kopargaon. So, so both of these were affiliated to the Savit. Uh, so both of these were affiliated to the Maharashtra State Board. After that, I had done my BSc from SHGM College, Kopargaon, which was affiliated to the Savitribai Phule Pune University. And after that, I had done my MSc from Dr. B.R. Ambedkar, National Institute of Technology, Jalandhar, Punjab. And I had done my MSc project in enhancement of mechanical and the durability properties of cementitious matrix upon incorporation with silica nanoparticle and the graphene oxide. Yes, let me start. Last day we have discussed which topic? Yes, chemical bonding was going on, sir. Okay, chemical bonding. Chemical bonding completed basic. सर मतलब लास्ट में था सर, मतलब लिमिटेशन अपने मतलब एमओटी के पूछे थे, वहां तक पहुंचे थे. Yeah, last thing hydrogen bonding, na? Yes. Yes, yes, sir. Types of Yes, hydrogen sir. bonding. Yes, yes. So there are the two types of hydrogen bonding. So first one is the intermolecular hydrogen bonding, and the second one is the intramolecular hydrogen bonding. So basically, in the intermolecular hydrogen bonding, the different atom are involved. For example, the hydrogen bonding in the water is basically the example of the intermolecular hydrogen bonding, because here the two different water molecules are bonded to each other through the hydrogen bonding. And for the atom to do the hydrogen bonding here, the difference in the electronegativity between the two atoms should be greater than or equal to the 2.5. And also, the hydrogen bonding can be formed only by the second period elements like nitrogen, oxygen, and fluorine only. And also the intramolecular hydrogen bonding here. So the intramolecular hydrogen bonding is present within the same molecule. For example, if you take the example of the orthonitrophenol. So in case of the orthonitrophenol here, we can see. So so this type of example belongs to the intramolecular hydrogen bonding, and the boiling point of intermolecular hydrogen bonding is if the compound contain the intermolecular hydrogen bonding, then it will have the higher boiling point as compared to the molecule containing the intramolecular hydrogen bonding. Yes. Yes. What the limitation of Vesper theory, MOT, valence bond Yes, theory? yes, What the difference yes, of this? yes, First of all, this difference. Vesper, yes, VBT, yes, MOT. yes, yes, yes. Vesper, uh, VBT, and MOT. Yes. Yes. Vesper and the VBT, sir. So, sir, here basically, in case of VBT, here the valence band theory. So, the valence band theory only considers the valence electron here. It does not consider the s
or the p, it does not consider the element other than the valence electron. But in case of the Vesper theory, which we call as the valence shell electron pair repulsion theory, so here the lone pairs which are which are involved in the bonding decides the geometry of that bonding, geometry of that molecule. And here MOT is basically the most advanced of all these two theories. So MOT says that MOT is basically the polycentric, means the many nuclei are involved in the MOT, and the electron are uh, surrounded to that atom. Basically, MOT says that uh, basically the MOT says that when the atomic orbitals uh, when the equal amount of atomic orbitals uh, mix with each other, they form the equal amount of equal number of molecular orbitals. So in MOT, we form the bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. But in case of VBT, such concept is not there. In case of VBT, we does not see the, the the bonding molecular orbital or the anti-bonding molecular orbital. So the bond order also we cannot calculate through the VBT, and the VBT also cannot explain the paramagnetic behavior of the oxygen, but it was explained by the MOT. And this whisper is basically for the predicting the shape of the compound. For example, if we are having the compound like ClF3, so it will have the 7 electron in its valence shell. So and to complete the octet, we are having the 3 fluorine atoms here basically. So it will form the bond with the 3 fluorine atoms. So here we will have the 2 lone pair and the 3 bond pair in case of VCl3. But the different arrangement of this lone pair can be possible here. So for example, here we can, for example, here ClF3. For example, in case of first, here we have kept the lone pair on the equatorial position. Here we can also keep this lone pair on axial position. For example, if you put it on axial position, suppose that we have put it on the axial position. So here whisper theory tells us that whether we have to put the electron on equatorial position or the axial position. So the whisper uh, uh, tells us that the lone pair should be present on that position so that the maximum angle can be possible in between the lone pairs. So here we can see that the bond angle is 180 degree. The 120 degree, and here the bond angle is only the 90 degree. So here will be the lot of repulsion. So the molecule to have the stable structure, it will be exist in this form. So this is explained to us by the whisper theory, the arrangement of the lone pair in the molecule basically. And PBT basically PBT is based on the hybridization phenomenon basically. So the hybridization is not the experimental concept; it is only the theoretical concept basically. And also, in case of VBT, uh, VBT is basically the monocentric. So we only consider the one nucleus in case of the VBT, and MOT is the polycentric. We consider the lot of nuclei in this case. And here in case of MOT, we we can see the bonding molecular orbital as well as the non-bonding molecular orbital. But in case of VBT, such a concept is not there, like the bonding molecular orbital or the anti-bonding molecular orbital. It only tells us about the hybridization. And 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 the complex like the Huggins complex, which was the Cu NH3 2 2 plus was cannot be explained by the VBT. Also, MOT has a lot of advantages over these two theories, but the main limitation of the MOT is that it is very complex. And for drawing the MOT diagram for the polyatomic molecules, it is very difficult.
Yes, good. Next, what is Fajan's rule? What the main application of Fajan rule? Yes, sir. Yes, sir. So the Fajan's rule basically tells us about the covalent character in the compound. So, so the Fajan's rule. So the Fajan's rule tells us about the covalent character in the compound. For example, uh, it tells us that the smaller the size of the cation, higher will be the covalent character in that compound. And higher the 1 minute, sir. Next, sorry, I want to change my statement here. Larger the size of the cation, higher will be its covalent character. Larger the size of the cation. Higher will be the covalent character. And smaller the size of anion, higher the covalent character. So in case of the Fajan rule, basically uh, the covalent character is basically directly proportional to the size of cation and inversely proportional to the size of anion. Yes, sir. Yes. What is covalent bonding? Ionic bonding? Yes, yes, yes. So the covalent bonding is basically formed by the equal sharing of the electrons. So, for example, the covalent bonding is formed uh, when we are having the two non-metals which are having the tendency to accept the electron. Means here the both the atoms have the tendency to accept the electron, but uh, here out of these two atoms, no atom has a tendency to donate its electron. Both have the tendency to accept its electron, so they form the covalent bonding basically. So here the covalent is bonding is formed between the uh, Cl Cl Cl2 and the ionic bond basically. So the ionic bond is formed when one atom has a tendency to donate its electron to attain the stable outermost electronic configuration, and the one element or the non-metal is basically having the character to accept the electron. So for example, we can see the example of the NaCl. So here in case of NaCl, here the Na plus, so the Na has the tendency to lose its electron, so that it attains the electronic configuration, that is the 10 electron. So the 8 electron are present in its valence shell. So we can see 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 electrons, and it has the positive charge. And also the Cl minus here accept 1 electron, so that it is also having the 8 electron in its outermost shell. So they form the ionic bond like Na plus and Cl minus. And the ionic plus and the ionic bond has a more strength as compared to the covalent bond. Yes, sir. Yes. What is a hydrogen atom spectrum and how many types of hydrogen atom spectrum? Yes, sir. Hydrogen atom spectrum. सर मतलब किसके बारे में बताना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मतलब स्पेक्ट्रम थोड़ा जो सा कोई होते हिंट। हैं लेमन सीरीज, वाल्मर सीरीज, फास्ट चांसेस, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यस यस सर, वो अभी मुझे याद नहीं, मतलब मैंने 10th में करे थे सर, उसके बाद देखा ही नहीं था उनको, मतलब 12th में करे थे सर, 9 मंथ। What is Heisenberg uncertainty principle? Yes, sir. Heisenberg uncertainty principle. Yes, sir. So the Heisenberg
uncertainty principle tells us that we cannot simultaneously find the position and energy of that compound. So we cannot simultaneously find the energy and the position of that compound. So we have to find it separately. For example, for finding out it was distance, I guess, distance and the huh. So we cannot find the distance and the position of the position of that compound simultaneously, because for determining the position of that compound uh, we have to introduce a light on that compound, so that the position of that compound will get changed for the smaller particles, sir. Sir, I have to see it more clearly, sir. Heisenberg's. What is de Broglie law? De Broglie equations. Yes, sir. De Broglie, sir. सर ये भी देखना पड़ेगा सर अच्छे से, डी ब्रॉगली का भी. Okay. इसमें क्वांटम नंबर है, इसमें क्वांटम नंबर्स. Yes, sir. 3 quantum number. Yes, how many types? Yes, yes. Sir, we are having the 4 types of quantum number. So the first one is the azimuthal quantum number. So the first one is the azimuthal quantum number. Quantum number. Second one is the spin quantum number. Third one is the magnetic quantum number, and another one is azimuthal, magnetic, and so, this azimuthal quantum number basically tells us about the in which cell the electron are present. So this information we get from the azimuthal quantum number. For example, if we are having the electronic configuration that is 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. So here the azimuthal quantum number, the value of El will be 3 in case of this compound, which is having electronic configuration this. And the value of the spin quantum number basically so the value of spin quantum number is basically varies between +1/2 and सर ये भी अच्छे से नहीं पता इतने अच्छे से. What is microstate in chemical bonding? What is the main measurement of microstates values? Yes, yes. Find microstates in Yes, yes. S1, S2. Yes, sir. Sir, the microstate. Yes, sir. Sir, the microstate basically gives us the information about in how many arrangement we can in how many types we can arrange the electrons basically. That we can get from the microstate. In how many types we can arrange that electron. This information we get from the microstate. So here, for example, we have the an example with the P2 electronic configuration, which is having 1, 2, 3 orbital. Here we are having a 2 electron in that. So in this case, the microstate of this P2 electronic configuration we can get through the formula, that is microstate, which we can calculate by the formula n factorial upon r factorial n minus r factorial. So here n factorial is basically the how many electron that can accommodate in the p orbital. So here 6 electron can be accommodated in case of the p electron. So here n factorial is 6 upon 2 factorial, 6 minus 2, 4 factorial. So here we get 6 into
5 into 3 into 4 factorial. So 2, 4 factorial get cancelled. Nobod upon 2. So here we are having the 45 microstate in case of the P2 configuration. And another formula to calculate the microstate is that so for example we are having any term symbol that is a 2D term symbol. So in case of this 2D term symbol we use the formula that is 2s plus 1 into 2l plus 1. So here the 2s plus 1 is basically this value which is the 2, and the L is basically the azimuthal quantum number for the D term. So that is the 0, 1, 2. So we get 2 into 2 plus 1. So 2, 4, 5. So here we are having the 10 microstates. So we are having the two formulas to calculate the microstate. Yes. So the one yes. What is formal charge? For the main application of Yes, formal charge. yes, sir. So the formal charge is basically the charge on that separate atom, so that it can attain the stable electronic configuration. So for example, if we are having so the formula for calculating the formal charge is basically, so the formal charge is equal to the valence electron minus 1 by 2 bonding pair electrons minus lone pair electrons. So for example, if you have to calculate the formal charge on the compound, that is we can take the example of N2O for example. So here we can draw its structure like 1 2. So here so sir, here basically we can see that if we have to calculate the formal charge on this oxygen atom, so so for example here we take another example that is the water basically sir here. So here we can see that water which is having the two lone pair. So here if we have to calculate the formal charge on this water oxygen here, so we can calculate it by the valence electron here. So the how many valence electron are there in case of oxygen? Here we are having 1 2 3 4 5 6 valence electron on the oxygen atom. One half bonding electron pair that we are 1 2 3 4 4 bonding electron minus the lone pair electron that we are having 4 electron. So here the formal charge on oxygen that we can get 2 minus 4 4. सर यहाँ पे कहीं मतलब कुछ तो मिस्टेक हो रही है सर मेरी. Sir, it is showing the zero formal charge on this oxygen atom here in case of water.
Yes. तो ये ट्राई कर लेना, वो एग्जाम्पल था एक बेसिक, जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बस बेसिक पता होना Yes, चाहिए, फॉर्मूला चार्ज का फॉर्मूला क्या है और उसका यूजेस क्या है। yes, sir. इसमें हम कुछ चीजें और भी डिस्कस करते हैं, जैसे क्वांटम नंबर है, Yes, sir. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उसमें Yes. कुछ चीजें जीमान स्टार के इफेक्ट किए जाते हैं डिस्कस, उसका क्या यूजेस है वहाँ पे। जेनॉन स्टार की इफेक्ट सर। हम्म। नहीं सर, इसके बारे में नहीं पता सर मुझे। व्हाट जीमन सर। जीवन जीवन एंड स्टार इफेक्ट होते हैं ना, मैग्नेटिक के लिए और इलेक्ट्रिक के लिए होते हैं ना। वॉन एवर यस साइकिल यस। है, केमिकल बॉन्डिंग में हम डिस्कस करते हैं वॉन एवर साइकिल। हाँ हाँ, यस यस, करते क्या है वो? सर। कैन आई एक्सप्लेन दैट सर? यस 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 यू। यस सर। सर, द बॉर्न हैबर साइकिल इज बेसिकली the energy that is required, or the in the formation of one mole of NaCl. So that we represent through the Born-Haber cycle. So here basically, firstly, uh, I'm taking the example of the NaCl. So firstly, here we are having the Na that are present in the solid state. So here, firstly, we convert it into the gaseous state by giving it the sublimation energy. So here I have given the sublimation energy, and after that, here the one electron is loose from the sodium to form the sodium plus ion. So here the energy that is released is basically given by the ionization energy is required to uh, to to expel this electron. And another is the Cl here. So here basically we convert the Cl into the Cl gas, and after that the Cl accept the electron. So here the uh, what we call as the energy, that is ionization energy, and electron gain enthalpy. So the electron gain enthalpy is basically we can gain. So we can show it like Eg, electron gain enthalpy. And here when these two molecules combine with each other, they form the structure that is NaCl. And the energy is also released when the NaCl compound is formed here. So basically the delta H of formation here. So here basically the formation of NaCl is given by the sublimation energy plus sublimation energy basically, plus the ionization energy, uh, minus electron affinity. Basically energy is released when the electron is accepted by the chlorine, minus, and electron gain affinity minus this energy is released, which is a U. So we represent it like this. And according to the Hayes law, it tells us that whether the reaction takes place in one step or the more than one step, the energy required in the formation of the same molecule, or the energy required for the formation of the same molecule, should be same, whether it is taking place in the one step or whether it is taking place in the multiple steps. यस। यस, बेसिक पॉइंट इज क्लियर है योर केमिकल बॉन्डिंग। यस। Yes, yes, नेक्स्ट ये है कि एनी लिमिटेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इन केमिस्ट्री, yes, लिमिटेशन। yes, yes, sir. So the chemical bonding has its limitation. For example, so here we see the chemical bonding basically when the magnetic field is not applied to the molecule, but when we apply the magnetic field, so that the bonding in case of the molecules
or the lone pairs or the bond pair present in the molecules can change. And here the chemical bonding is basically the theoretical phenomenon. It is not the experimental we can do in the lab. So in case of experimental condition, some factors can affect like the repulsion or any or the more than the factor, so that the structure of that compound may get change something. And now the most recent and the advanced theory is the MOT. But the MOT has also its disadvantages, because the it is for the polyatomic molecules, it is very hard to determine their structure with the or to know or to explain the bonding in MOT. For the polyatomic molecule, it is very difficult or the complex, sir. I have one question, sir. यस सर मतलब मैं जो फिफ्थ चैप्टर ले रहा था ना, वो तो मैं मतलब सर 1H NMR लेने वाला था, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग ले या सॉलिड स्टेट ले लूं फिर सर, मतलब क्योंकि सर मैंने फिजिकल का कोई भी चैप्टर नहीं लिया है, तो क्योंकि सर दोनों भी चैप्टर अच्छे हैं मेरे, तो कौन सा प्रेफर करूँ? फिजिकल में कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सर नहीं नहीं, मतलब सॉलिड स्टेट ले लूं सर क्या फिजिकल में? इलेक्ट्रो का हो गया है? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है सर मैंने। आपने लिखवाया था पहले। ओएमसी हो गया आपका, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया और केमिकल बॉन्डिंग। यस यस। बाकी आप सॉलिड ले सकते, फिजिकल में कोई नहीं है। थर्मो हाँ केमिकल। ये सर मैंने फिजिकल में नहीं सर, वो मेरे इतने मतलब बढ़िया नहीं है सर, वो मतलब थोड़ा सा, क्योंकि मैंने वो वाला पार्ट इतना पढ़ा नहीं है फिजिकल का। सॉलिड स्टेट अगर सही है तो कर ली, नहीं तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो कर ली। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो में 3 पार्ट आते हैं। यस सर सर, फिर मैं मतलब सॉलिड ही कर लेता हूँ सर उसकी, हाँ क्योंकि सर मतलब फिजिकल का भी कोई एक चैप्टर हो जाएगा फिर। हाँ। यस, यस सॉलिड स्टेट कर यस लीजिए। सॉलिड सही है। यस 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 बाकी हाँ सॉलिड। बाकी ये तो हो गया आपका केमिकल बॉन्डिंग, यस यस है ना। बाकी कुछ पॉइंट है आपके, वो कर लेना आप, जो आपने किए थे। जो यस एटॉमिक नंबर है और भी है जो चीजें यस जो हो पाई है, उनको आप कर लेना थोड़ा एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपका केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। यस बाकी अगर नहीं यस हो तो यस कल हम वो डिस्कस कर लेंगे 10-15 मिनट। तो यस अभी बाकी का क्या किया जाए, अभी 6 मिनट है लैब। यस सर। और सर मतलब जो लैब वाला पार्ट है सर, उसमें क्या क्या करूँ, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो कुछ कुछ है, या GC HPLC सर, उसके बारे में कुछ? नहीं क्योंकि सर जो वर्क है वो मैंने पूछा था। हाँ। जो वर्क है उसका, वो यस एपरेटस, सर। जैसे एपरेटस वर्क करते हैं साइंटिफिक यस ट्रेनिंग। अब वो एपरेटस जैसे IR हो गया, NMR हो गया, UV हो गया, विजिबल हो गया, यस HPLC क्रोमेटोग्राफी है, तो उनके बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ लेना। यस एपरेटस तो हर एक साइंटिस्ट यूज यस यस करता है, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो एक्सपीरियंस। फिर भी अगर पूछ आप बोल दोगे यस एपरेटस, तो आप बोलोगे कौन सा एपरेटस? आपने बोल दिया भाई HPLC, तो HPLC क्या है? हाई यस परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। उसका यस मेन एप्लीकेशन क्या है, यस फंक्शन क्या निकालते हैं, यस ये चीजें आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें। वैसे आपने प्रैक्टिकल का सेक्शन किया तो है, रोल में आ जाएगा यस ये। यस यस। और सर बाकी मतलब प्रैक्टिकल में कुछ और करना पड़ेगा सर इसके भी नहीं, अलावा सर, मतलब अपने? वही है एलिमेंटल एनालिसिस, फंक्शनल ग्रुप और एनालिटिकल सेक्शन। एनालिटिकल क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रामेटिक, इंस्ट्रूमेंटल, ये 5 पार्ट है। कोई भी यस एक्सपेरिमेंट यस है, SO4 का एक्सपेरिमेंट है, तो क्वालिटेटिव होगी, क्वांटिटेटिव होगी, यस सर वॉल्यूमेट्रिक, ग्रामेट्रिक, और ये इस तरह से बेसिक है। अब सारे बेसिक रहते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कम ही पूछते हैं BRC में। फिर भी अगर पूछ लेते हैं तो इसलिए यस सर तैयारी तो होनी चाहिए ना अपनी, प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, यस इसकी तैयारी करते हैं। वैसे मेनली उनका फोकस आपका इंट्रो रहेगा, और BRC के बारे यस में पूछना है, या फिर केमिस्ट्री, ये चीज ही मेन फोकस होता है। यस यस बाई चांस यस अगर यस पूछ ले तो इसलिए हम तैयारी करते हैं, पूरा आपका सारा सिस्टमेटिक से। आपका MSc 4 सेमेस्टर यस प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट का कुछ भी पूछ सकते हैं, वो तो मेन इंपॉर्टेंस है, इसलिए उसको भी तैयार कर लेते हैं हम। यस यस।
बाकी बताइए आप, फिर सॉलिड का कुछ Yes. स्टार्ट करें अभी? नहीं सर, अभी तक पढ़ा नहीं सर, मतलब मैं कल पढ़ूंगा सर उसके बारे में, सॉलिड के बारे में। मतलब सर मतलब सर पहले करा हुआ है, बट अभी मतलब रिवीजन नहीं करी है तो। कितना है आपका, डेट क्या है इंटरव्यू का? सर मेरी 7 है। 7 मार्च। और सर जो वो दोनों लोग हैं सर, उनकी 4 है सर। जो एक गणेश और गणेश और एक सर वो कृष्णा, उनकी 4 है। दोनों चार कृष्णा। फिक्स? एक ही दिन है दोनों की? हाँ ये सर उनका 4। हाँ या हाँ सर, उनका ये एक ही दिन है दोनों का। सही है, बढ़िया है साथ में। Yes, sir. आपका यहाँ से बीआरसी कितना दूर है? सर मतलब इतने ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से होगा हार्डली मतलब 200 किलोमीटर होगा सर। मतलब पुणे से तो पास ही है सर यहाँ से। 200? ये सर वो 4 घंटे लगते हैं सर, मतलब यहाँ से वो मुंबई के। ट्रेवलिंग जो टाइम जो मिल रहा है टैक्स, वो कैटेगरी वालों के लिए है कि सबके लिए है? और नहीं सर, वो जो बस सर मतलब SC और ST के जो स्टूडेंट है सर, उनके लिए मिल रहा है सर ये टीए। वैसे एसओ में तो टीए सर सबको मतलब जो मिलता है। ट्रैवलिंग, नहीं सर इसमें नहीं देने वाले सर, वो जो नोटिफिकेशन है ना, उसमें लिखा हुआ है कि बस मतलब ST और SC कैंडिडेट को ही मिलेगा ऐसे टीए। क्योंकि ये जो एसओ का और टीओ का होता है उसमें सबको मिलता है। हाँ ये सर। मतलब सर इसमें कैंडिडेट भी ज्यादा है शायद, तो फिर इसीलिए ऐसे नंबर ऑफ करा होगा कैंडिडेट उन्होंने। ज्यादा है, यस, नंबर कैंडिडेट ज्यादा है इसलिए। हाँ इसलिए। कोई नहीं, बढ़िया है। बाकी आप तैयारी कीजिए, बिल्कुल बढ़िया, अच्छा कर रहे हो। थोड़ा उनको भी लगाइए। उनमें क्या है, थोड़ा वो यस यस। कृष्णा है। हाँ, उसका थोड़ा यस पोजीशन कैसा है, उसको थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिए साथ में लेके, क्योंकि डिस्कस करोगे तो ज्यादा यस बेस्ट। यस। ये जो पोस्ट है ना, यस सर, अब मतलब यस यस। उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये जो पोस्ट है ना, इसमें थ्री पॉइंट यस नाइन लोगों को ही निकाला है। बहुत वैकेंसी है, इसमें यस। बहुत लोग जाएंगे, वो ऐसे ही यस जाएंगे लोग बिना तैयारी के जाएंगे, उनका क्या उम्मीद करते हो उनसे, कुछ भी उम्मीद नहीं। जो तैयारी करके जाए तो इसलिए हाँ थ्री यस यस। 9% है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है। टी और एसओ में तो क्या है यस कि बहुत कंपटीशन है, वहाँ तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। लेकिन यस। यहाँ यस नहीं, यहाँ नहीं है, तो इसलिए चांसेस है बिल्कुल। बस थोड़ा रह गया है टाइम, पूरा लगा दो जी जान, कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दे देना, यस। आज चांस रहेंगे सिलेक्शन के। 99.9 यस यस। चांसेस, क्योंकि सही चल रही है आपकी परफॉर्मेंस, और कोई। सर वो, यस सर, और एक क्वेश्चन पूछना था सर। सर मतलब मेरा जो आई सर पुणे में हुआ था सर, वो बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं लगे कुछ मतलब एक्स्ट्रा बता रहा है कुछ ऐसे। नहीं नहीं, कुछ मत बताना अपना, कुछ मत बताना आप। बेसिक इंट्रो यस दे सर। देना बस, और अपने यस सर। अचीवमेंट बस। बाकी कोई यस सर। गैप वगैरह भी है यस सर। आपका क्या? हाँ सर गैप है, मतलब मेरे 2022 को हुई है, तो अभी 1.5 साल हुआ है मतलब MSc हो। तो बोल देना मैं ट्यूशन पढ़ाता था, बस वो सही है एग्जाम के लिए। वो ट्यूशन देता था या फिर हाँ कोई यस यस। पढ़ाता था बच्चों को, बस ऐसा करके ऐसा सिंपल अपने घर पे, ये नहीं किसी इंस्टीट्यूट का नाम मत लेना, उससे क्या यस है, यस। नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इससे बेसिक यस से यस। क्या है, आपका वो रह जाएगा, गैप पूरा हो जाएगा। बाकी आप तैयारी कर ही रहे हैं। यस यस। यस यस। बाकी ये गेट का आंसर की आ गई, गेट का एग्जाम दिया था आपने, जीएसआई का दिया था? हाँ नहीं सर, GSI का नहीं दिया था, बट सर मतलब गेट में आ रहे हैं सर मेरे, मतलब 30 के ऊपर आ रहे हैं, मतलब 34 के फाइनल करीब। कल नाइट में आ गया था, ऑफिशियल आंसर की भी आ गई, पेपर भी आ गया। हाँ यस यस यस, वो गेट देखा था गेट मैंने। का रिजल्ट आ गया, नेट दिया थे आपने? हाँ ये सर नेट दिया था, बट सर मेरे LS उसमें 1 मार्क्स से रहेगी, मतलब मेरे 90.5 आ गए थे मेरे। एक मतलब क्वेश्चन के मार्क कम हुए थे, मतलब जब फाइनल लिस्ट आई ना, तो उसमें तो। और जो मतलब सर जो कट ऑफ गए वो मतलब 91.8 गए OBC का। हाँ, तो इस मेरे बार एक कट मार्क ऑफ, कम है मतलब उससे कट ऑफ से। इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा यस गई है सर। अभी तक। सबसे ज्यादा शायद 117 थी आई थिंक, उससे यस यस। उसके बाद अब गई है ये। हमें बस सर मतलब ये मतलब जो ये गणेश का हुआ है सर, मतलब LS हुई है उसकी, उसके 100 मार्क्स थे तो उसकी LS आई थी। हाँ, 100 था तो वो उसमें थी ना, ओबीसी में। और नहीं सर, उसका EWS था तो LS हाँ, आ गई ईडब्ल्यू उसकी। एस था। ईडब्ल्यू एस में तो उन्होंने यस बताया था, ईडब्ल्यू एस में तो ईडब्ल्यू उसकी जीआरएफ कितना गया है, 102 गया है, ओबीसी का जीआरएफ। हाँ यस सर 102। यस यस।